Okay, hello everybody. I'll be vlogging today, and the reason for me vlogging is just this. My room is all messed up. I really don't like to sit between all this. So I'm realizing it now when I'm actually sitting in between a big pile of books and clothes, which I can't actually clean in a second because मेरे बहुत सारे books हैं जिसको segregate करके clean करना है. Those books were actually sitting very quietly. मैंने ही चुल करके उन सबको वो जो जगह है ना यहाँ पे उधर से निकाल के बाहर रखा, थिंकिंग आई क्लीन एवरीथिंग. बट देन कुछ बुक्स जो है वो इमोशनली अटैच्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल माई रिकॉर्ड बुक which is only one with me now. I don't want to throw it. The reason is I am already pass out now. I will not have such records in my life anymore. So I want to keep it as a memory. And I don't know for how many days I'll be emotionally attached to it. But the days I'll be emotionally attached, I do want to keep it. Then there are some number of books which I have to use because there are still extra pages in it and I don't want to waste those pages. And I can't even tear because that is more pages to tear. Even if it's like 2 or 3, I might even tear. लेकिन ज़्यादा है तो मुझे tear करके वो book को बिगाड़ने का भी मन नहीं है. And then there are such diaries which actually are my very पुराने डायरी जिसमें मैं कुछ चीज़ें लिखा करती थी, not regarding to my life or anything, but regarding to what I will be further, what do I want to be further, उस चीज़ से. और मुझे ना बहुत डीमोटिवेशन सा हो जाता था, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिख देती थी. S you're strong, which means S stands for you're strong, ऐसे kind of things. And ऐसे सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा करती थी and I don't really get motivated now by this, but I really want to keep them as a memory, at least to show my children. मैं खुद ही नहीं देखती बच्चों को, क्या ही दिखाऊंगी. And then early morning my mood was so nice कि इतना अच्छे मूड में मैंने ना I decided to draw doodle. तो उसके लिए मैंने बॉक्स भी डाल के रखा, which actually I didn't, because मूड अच्छा था just for a moment. उसके बाद वापस खराब हो गया था, मैंने उसको वही बंद कर दिया. And then this pile of clothes were actually lying on that chair, जिसको मैंने फिर से उठा के बेड पे रखा कि मैं इसको साफ करूंगी, लेकिन मैंने किया नहीं, कुछ नहीं किया मैंने. So the main thing that I'm going to tell you is don't trouble the trouble until the trouble troubles you, because the books which were lying on my table did not trouble me, but I went up to them and told them कि आ जाओ मैं तुमको साफ करूंगी, और फिर मैंने नहीं किया. एंड देन these were lying behind, तो मैंने उनको निकाल के इधर लाया गया, आज चलो वो हम आपको घड़ी करेंगे, लेकिन ये देखो अभी इधर ही पड़ा है, मैंने इसको घड़ी नहीं किया. तो इट समटाइम्स इट फील्स बोरिंग. माई वीडियो लैगिंग. ओके, सो मैंने कभी भी ऐसे बैठ के व्लॉग नहीं किया है, मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि ऐसे करने का मन तो था मुझे हमेशा, लेकिन लाइफ में किया नहीं है, तो सोचा कि कब तक सोचती रहूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा. तो अभी क्या. एंड इट्स एक्चुअली नाइस व्लॉगिंग. Bye. I'll meet you once I'm done cleaning with this. My room is back to its own room state, and it's not anymore being that गंदा सा मार्केट टाइप्स जहाँ पे एक जगह बुक्स बेचने बैठे हैं और एक जगह क्लोथ्स बेचने बैठे हैं. So let me do it clean. Let me do clean things and then come back.
I finally finished cleaning everything, and I realized one thing, that I can do anything if my camera is, I mean, my phone is in camera mode, which means if my camera is filming me and I have Tarak Mehta on, so there is no distraction that can take me in. वरना अगर मैं फ़ोन को ऐसे तारक मेहता लगा के देखूँ ना, एक भी नोटिफिकेशन आ जाए, मैं सीधा चली जाती हूँ देखने के लिए. सो थिंग्स आर डन. नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली खाना खा के. Bye. See you in the next vlog where I actually do something good. Bye bye. Like, share, and subscribe.